कि आप सबने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था एक क्रॉकरी टूर करने का, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरी क्रॉकरी टूर पे। सो ये जो क्रॉकरीज है मेरे पास, ये ओवर 10 इयर्स का मेरा कलेक्शन है, जिसमें आप लोग मेरी फर्स्ट क्रॉकरीज देखोगे, मेरी रीसेंट क्रॉकरीज देखोगे, एंड ओवर द टाइम मुझे कैसी क्रॉकरीज पसंद आने लगी वो भी देखोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो बेसिकली यू गाइस नो कि मैं जो भी वीडियो शूट करती हूँ अपने बेडरूम में शूट करती हूँ, एंड द थिंग बिहाइंड दिस रीजन इज दिस कबर्ड। सो इस कबर्ड में है मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट। सो लेट्स कम इन एंड हैव अ लुक। सो बेसिकली ये मेरा क्लोथ कबर्ड नहीं है। आई विल गिव यू अ लुक ऑफ दिस कबर्ड। सो इसमें ऑलमोस्ट 5 कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। एक एक कंपार्टमेंट पे चलते हैं हम। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट कंपार्टमेंट। यहाँ पे यू कैन सी सो मेनी प्लैटर्स एंड ट्रेज। आई विल स्टार्ट विद फ्यू। सो ये मेरे पास ब्रास का ग्लास है जिसमें मैं कटलरीज रखती हूँ। सो दीज आर माय सम गोल्डन स्पून एंड फोक्स। उसके बाद I have some coasters, wooden coasters. मुझे wood बहुत पसंद है, so I have these small and big coasters. Then some baskets I have over here. Baskets हैं, बहुत सारे props आपको देखने में, wooden cutouts। मेरे को wooden बहुत पसंद है। Again some props. Okay. So I'll show you some platters जो मेरे favorite wooden platters हैं। So this is the one जो मैंने पेंट किया था। ये एकदम गोल्डन कलर का था, गोल्डन ब्राउन। So इसको मैंने एक तरफ ब्राउन एक तरफ ग्रे, so I can use it 2 ways. You can also paint your platters like that. Then I have this wooden platter. This one is another sizzler platter जो मैं ऐसे ही सर्विंग के लिए यूज कर देती हूँ। आपने शायद ये मेरे बनाना टिक्कीज में देखा होगा, if you have watched the video नवरात्रि वाला। Then few more platters. This again wooden tray. This is a wooden platter जो मैं usually as a chopping board भी use कर लेती हूँ। So this is a multi-purpose thing. If you flip it, आप इसको अगर उल्टा कर दो तो this will become your chopping board as well. Alright, yeah, few more platters over here I have. A lot of thing. Okay, so my recent favorite is this one because इसमें ऐसे rough wooden cutouts हैं। मुझे बहुत अच्छा पैटर्न लगता है। So this looks so pretty, so nice, and इस पे आपको कुछ भी props की ज़रूरत नहीं है कि already इतना beautiful है। You have seen my lemon tart का photo, वो मैंने इस पे click किया था। Then again I have these chopping boards और presentation platters. So मैं basically जो मेरे crockery की shopping करती हूँ, so it is not fixed from any place. मैं जहाँ भी जाती हूँ, travel करती हूँ, जहाँ पे भी मुझे कुछ अच्छा दिखता है। So I am basically from सूरत। तो सूरत में बहुत सारे exhibitions होते हैं। सूरत, you can say it is a city of exhibitions. तो I usually just go into exhibition. I don't know, बहुत अलग-अलग cities से आते हैं distributors, exhibitors, and they just display their things, and जो भी मुझे अच्छा लगता है just grab it. बहुत सारी चीज़ें online order करती हूँ from Pepperfry, Urban Platter, Amazon. So these are the sites I usually purchase my crockeries. और बहुत सारी crockeries मैं exhibition से लेती हूँ। जैसे ये भी मैंने एक exhibition से लिया था। So ये इस तरह का था। This was the actual color दोनों तरफ से, and मुझे ये कलर उतना पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको ऐसा पेंट कर दिया। तो this is all hand painted. I love painting as well. Okay. Few more things. Okay. So yeah, I also like funky things. So this is a momo steamer that I have. Then a cart, एक wooden cart. ये भी मुझे एक exhibition में ही मिला था, and I just grabbed it. Some colorful basket, cake stand. I'll keep this here. What else? Yeah, this is my really most favorite cake platter. So एक wooden का cake stand है, and बहुत ही beautiful pictures आती है इस पे। So able to see
बहुत, दिस इज अ वेरी प्रिटी थिंग. सो एज आई से मुझे वुडन बहुत पसंद है. देन अनदर वन दैट आई हैव इज दिस. एक मीनाकारी जैसा इसमें है, लैमिनेटेड है. दिस इज आल्सो वेरी प्रिटी. सो अगर आपको सिंपल जूसेस या फिर पानी का ग्लास ही सर्व करना है गेस्ट को, दिस विल लुक वेरी नाइस. ओके, सो द बिगेस्ट प्रॉप या प्लैटर जो मेरे पास है वो है ये पूरा, सॉरी पहले हम ये देखते हैं उसके बाद वो देखते हैं. सो दीज आर फ्यू वेरी फंकी प्लैटर्स. दिस इज वन इन द लेमन वेजेस और लेमन स्लाइस. एंड ये भी एक प्लैटर रैंडमली मैंने एग्जीबिशन से उठा लिया था. सो आई जस्ट गो एंड ग्रैब. ये पूरा एक वुडन लॉग है जो एक्चुअली ट्री से कट हुआ है. एंड इफ यू सी, आई टेल यू फैक्ट कि ये जो रिंग्स होते हैं ना आपके वुडन लॉग पे, ये रिजेंबल करते हैं कि ये कितना ओल्ड ट्री है. सो दिस इज द लाइक कट आउट फ्रॉम अ वेरी ओल्ड ट्री एंड इट इज एक्चुअल रियल ट्री का कट आउट. आई यूजुअली प्लेट माई मेजे प्लेटर्स ऑन दिस, या फिर कुछ भी एक्सोटिक रस्टिक मुझे प्लेट करना होता है. आई प्लेट इट ऑन दिस. जस्ट लुक एट द डिटेल्स. सो ये एकदम असली पेड़ से निकला हुआ है. एंड दिस इज माई दी मोस्ट फेवरेट थिंग दैट आई हैव. हाउ नाइस नो, सो क्यूट. मुझसे भी बड़ा है, just so heavy, बहुत heavy है. I'll keep it. Okay, then again, I like funky things. I have this खटिया चारपाई. अभी तक मैंने शायद एक रेसिपी में से यूज किया है. That was for सरसों का साग and मक्की की रोटी. Then okay, some taco holder. वुडन बोर्ड यू मे से. ये फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा होता है. इट गिव्स अ नाइस बैकग्राउंड टू योर फोटो. आप इस पे कुछ भी रख दो तो इट गिव्स अ वेरी रस्टिक लुक. जस्ट दिस एंड योर फूड एंड इट लुक्स वेरी नाइस. अगेन few wooden plates. I'm planning to add some more plates to my collection. Recently I have to, because I have so many plates, so it becomes very like confusing for me to buy or not to buy. But yeah, I already have so many platters, so I do invest in those. And this is something very unique जो मैं use नहीं करती हूँ, but I found it again in an exhibition. So ये basically एक pizza platter है जिसको मैंने white paint कर दिया, if you can see. So it was something like this color. पीछे का साइड मैंने नहीं किया. I was becoming very lazy. ये सब कुछ मैंने एक ही साथ पेंट किया था. I hardly get time to paint my crockeries, but जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है I just paint them. So yeah. So ये एक पिज्जा सर्वर है जो कि अलग अलग इस तरीके से हो जाता है. तो आप एक सर्विंग एक पे सर्व कर सकते हो. You just cut your pizza और इस पे आप रख दीजिए and then you can serve it. So this is all about my wooden platters and wooden crockeries. We'll move on to the next compartment, that is the plate wala compartment. Okay. So yeah, moving on to the next rack. ये rack जो है ये पूरा it's all about plates and different crockeries. So I'll start with this. Again ये भी मैंने ये एक एग्जीबिशन से ही लिया था. ये सारी चीजें एक साथ ही ली हुई है. So again I did not like the color, तो मैंने इसको भी पेंट कर दिया. So I painted it in some pastel and some in checkerboard. Then I have some like another wooden thing here क्योंकि wooden वाले रैक में बिल्कुल space नहीं था तो मैंने ये इधर ही रख दिया. And these are some soup bowls that I like actually. So I'll show you. So these are spoons that I really like and use. They're very cute and you can also serve your like mini dishes. आप इस पे छोटे छोटे पोर्शंस डिजर्ट के या स्टार्टर्स के सर्व कर सकते हैं. एंड या दिस इज अ soup bowl. This is another soup bowl. This is a
pink color. It goes good with every color of soup. Then I have this. Usually I use this for serving my noodles and spaghetti. And this one, ये बहुत पुराना, ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट बाउल था जो मैंने कभी कुकिंग स्टार्ट करी. सबसे पहले मैंने ये बाउल बाय किया था. तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बाउल दैट आई हैव विद मी एंड आई स्टिल लव इट एंड आई स्टिल यूज इट एंड इट्स सो नाइसली. इसमें आप कुछ भी सर्व करो ना, इट लुक्स सो गुड. यू कैन सर्व सूप, यू कैन सर्व पास्ता, यू कैन सर्व योर राइस, रिसोटो एंड इट लुक्स वेरी गुड. Moving on, ये कुछ बर्नी है जो मैंने ऐसे रैंडमली उठा ली थी. एक हमारे टाउन में एग्जिबिशन लगाते हैं भैया, वो हर साल यूपी से आते हैं एंड ही गेट सम लाइक रियली कूल स्टफ्स. तो ये बर्नी मैंने उनसे ली थी. तो दिस इज ऑफ ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन कलर. देन आई गॉट सम ऑफ दिस छोटू बर्नीज. This colorful burnie. Then I have a lot of soup bowls over here. So usually ये एक है sauce pourer, जो कि बहुत ही pretty and सुंदर दिखता है. Then yeah, this is a cute मटका जो मैंने बनाया था when I visited Jaipur. So as a memory मैंने ये अपने साथ रखा है. I always thought of painting it and using it in my photography but never got a chance. I will do it definitely. Another prop that I have is this glass. So this is basically wine glass but I use it for photo shoots. So photo में जब आप इसे पीछे रखते हो तो you don't get to know it's a fake glass. Then these are some mugs. इसमें हमने शूट किया था हमारा स्ट्रॉबेरी रेड वेलवेट ब्राउनी, मग ब्राउनी. these are some props that I like. I use it like अगर आप बैकग्राउंड में ऐसे रख दो, just tag it and they look so beautiful. Okay, yeah, some more. Again another mug, salt pepper shaker. So ये सारी चीज़ें एक ही थीम की है. They give a very rustic and old look to your photography. Again this is of same pattern, another color from the same. Yeah, so I have two kettles, chai ki kettles. One is in black and one is in white. They also look very good at the background. अगर आप कुछ भी breakfast के लिए shoot कर रहे हो, if you're doing a muesli or tea या फिर pancakes, so this goes very good at the background. Then I have another milk pourer. Another mug which I usually use for serving my soups. And I also use these mugs to like bake my cakes, doing my mug cakes. Yeah, this is all about the crockeries, the prop section. Moving on. So yeah, moving on to the plates. सबसे पहले हम start करते हैं with the big plates. Okay, so I have like a lot of these. And some are really very huge. Alright, so yeah, starting with the first. So this is a really big plate. 450 rupees. ये भी मैंने जो भैया आते हैं यूपी से जो यहाँ पे एग्जीबिशन लगाते हैं, he gets these plates. And this is a really very nice platter वाला plate. So beautiful. And then I have these some great, amazing, beautiful plates. So this is a plain black plate. Then I have this another white cream plate. जिस bowl देखा था आपने, just like that, बस उसी के set का है.
show you. एक ये ब्लू प्लेट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है. इसके ऊपर जो पैटर्न्स है, it is like a brush stroke. So I have 2 of these plates. Just look at the pattern. So nice. Then I have this. ये सारे plates he gives me at like 50 or 100 rupees, but online अगर आप देखोगे तो they are so expensive, like 500, 600, 700. Same design and pattern. So I usually prefer buying from him. Then another one. This is also very beautiful. This mustard color. Alright, moving on. थोड़े और plates हैं मेरे पास. Let's see. So this is a very off shape plate जो एक handle के साथ है. I generally use it. Rarely use it. Then this grey one. Few more plates. So this is not a plate, एक dish है जो आप use कर सकते हो serving के लिए. And yeah, this looks so good. So इसका एक depth है. आप इस पे केक्स प्रेजेंट कर सकते हो, ओपन रस्टेड केक जब गेस्ट आते हैं. It looks so good. Some dotted plates. इस पे देख रहा हूँ बहुत कूल सा टेक्सचर है. So I have 2 of these. I generally buy जो plates मुझे अच्छे लगते हैं ना, मैं 2 buy कर लेती हूँ. So this I got from someone in gift. मुझे ग्लासवेयर इतना ग्लास प्लेट्स और ट्रेज यूज करना उतना नहीं पसंद. एंड देन दिस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. आई होप ये मैंने आपको दिखाया था इन अमूल का लाइव, आप लोगों ने देखा होगा. शोड दिस. सो या सो दिस इज अ मिनी मग का सेट, टी सेट. बहुत क्यूट सा है ये. आप इसको मिनिएचर कुकिंग में एज अ प्रॉप, एज अ बैकग्राउंड, मैंने अभी तक तो यूज़ नहीं किया बट इट लुक्स सो प्रिटी. एंड ये जिस पे पड़ा था दैट इज अगेन अ सर्विंग प्लेटर फॉर योर स्टार्टर. सो ये एक अटैच्ड कटोरी के साथ आता है जिसमें आप डिप सर्व कर सकते हो. एंड देन आपका जो भी फ्राइड पकौड़ा है, बिकॉज इट इज़ इन अ शेप ऑफ कढ़ाई, तो इसमें मैं यूजुअली ऐसे डिशेज सर्व करती हूँ जो कि फ्राइड होते हैं, कढ़ाई में फ्राई करते हैं. So I serve pakoras or fritters in this and then the dip. So this is my big plate ka section. So yeah, आपने बड़ी plates देख ली. Now I'll show you my छोटे tiny water plate. This is again किसी ने gift किया था. I used it in the background for photography. some mini plate. ऐसा ही आपने बड़ा प्लेट देखा होगा, like mini, quarter से भी mini plate है. Same I have in a cream color. Then I recently before lockdown I got these plates. मुझे बहुत पसंद है ऐसे pastel colors and इसके rim पे if you see there is a golden spike. So I really like the detail of it and it is like smoky finish है इसका, cloudy finish. So I got 2 of these color and 2 of these. So I used can you guess किस में मैंने यूज किया था? If you remember, comment it down below. एक का तो मैंने स्टिकर भी नहीं हटाया. This I got from Home Trends. Yeah, I got this from Home Trends. Okay, this is again ये मेरा life का first crockery था. So I got 2-3 crockeries when I started after completing my 11th standard. So I got this plate then with the soup bowl. Yeah, this is my first plate. So it is a coral plate and ये आज भी मेरे साथ है. आज भी I use it for plating and photography. Again, some regular white, black, printed
So I really like my things really organized. मुझे organized चीज़ें बहुत ज़्यादा like I'm OCD for non-organized thing. तो मुझे organized चीज़ें चाहिए. So I always stack them in pair so that I also get to know कि कौन सी plates मेरे पास 2 है और कौन सी 1 है. Again I have one more quarter plate of this. This I got from an online sale or come exhibition, but I like it. Then I have the same in quarter, more black and mustard. Yeah, this is all about these. And here I have some regular dinner plates, melamine के जो सबके घर में होते हैं. So nothing to show. So yeah, let's go into this rack. Okay, सबसे पहले I'll take this out. This is like जादू का पिटारा. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी कुछ अमेजिंग चीजें नहीं है. अगेन I love wooden. So again I got this from somewhere. ये big wooden bowl है. आप इसमें salads toss कर सकते हो जब बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं. Then these bowls. ये सब आपने ऑलरेडी देखा है मेरे वीडियोस में, लाइव सेशंस में. ये किसी आंटी ने मुझे गिफ्ट किया था, but I like this bowl. I usually have my salad and dinner in this. These छोटू कटोरीज, guys have already seen these. Again these, and इसके साथ ही I got these 2 mini wooden bowls. I love wooden. So yeah, nothing to show. आपने already almost सब कुछ देखा हुआ है. So what to show them? Okay. I like some traditional crockeries. These are mini toppers that I use for cakes and cupcakes. Couple का topper है ये. To the side. I also like very rustic things. Like I have this bucket. बहुत पुराना bucket है. So ये मैंने again एक online sale कम exhibition में से लिया था. This canister and this glass. I've got all of these together. So again, इस bucket में भी you'll see different types of spoons. So I like funky crockeries. These are like very cute. I found them very cute. I got it. Go with basic colors, primary colors for your photography. If अगर आप photography करते हो या if you like to collect crockeries, so just go with basic colors. So here I have a marble pattern, wooden pattern, then a basic black fork, a spoon. I also like different shapes. So I have this. This is like बहुत ही small इसका ये है and the stem is very long. So usually आप इसको coffee frappes serve करने के लिए use कर सकते हो. Then I call this a digger spoon. So I like the shape and I got it. Yeah. Then this is a wooden straw. ये एक wooden straw है जो मेरी ex assistant ने मुझे gift दिया था when she went for a trip. She got this for me. Again, I only use this for photography. I don't use it to take out honey. If you know, I'm allergic to honey, so I don't consume honey. Old canister. Then batis, kadai, handi for all the sabzi and dal things. एक ये अगेन वुडन मेटल कॉस्टर जैसा है. अगर कुछ गरम आप निकाल के आप प्रेजेंट करना चाहते हो आप वो कर सकते हो. आई ऑलवेज यूज इट लाइक दिस फॉर माई बोल्स इन कढ़ाई. सो इट बिकम्स लाइक नाइस प्रेजेंटिंग वाला. Then what do I have? Okay, there are a lot many things in this rack. Again, this is something that I got मेरे फर्स्ट क्रॉकरी शॉपिंग पे जो मैंने लिया था. ये दोनों उसका ही एक पार्ट है. सो दिस बोल, दिस इज अ डिटैचेबल बोल. आई फाउंड दिस वेरी क्यूट. आई गॉट इट. एंड अगेन दिस इज अ कोरल का बोल.
So starting में when I started cooking in 11th standard, so I used this bowl with that coral का plate and मैं सब कुछ इसमें present करती थी, everything like my pasta, my noodles, everything, and I used to click the photo in this bowl and that plate. That's it. I love these bowls and they are oven proof. Yeah, they are oven proof. Okay, a closer look to the cupboard. So here you will see some more handies. So this is a black handy I used for my brown rice biryani. Then okay, some bowl. ये थोड़ा crack हो गया है, but I like this kind of print. Then these bowls. अगर आप देखोगे तो ये सब एक ही जगह से लिए हुए हैं, तो दंड भैया gets all these every time थोड़ा अलग collection होता है, but it is so good. Oops. So this is another bowl that I use for serving my Chinese soup or noodles or Chinese bhel, like that, things like that. Then some more handis I have, bowls I have. So again एक मटका है, ये बहुत क्यूट सा छोटू सा मटका है. This तो इसमें आप कोई भी फ्राइड फ्रेंच फ्राइज और चीज़ बॉल्स, things like that you can serve. Usually you will see all these in cafes. Again a Chinese soup bowl. So these are in 2 colors and patterns. And yeah, एक ये नारियल bowl है. I got this online. I thought of making it at home, but let's keep it aside. Maybe someday I'll make it. Yeah, a few more handies. So I love handies. This is a black handy. You have seen the brown one. You have seen the black one. This is the white one. Sorry, this is the white handy. This yellow mini casserole thing. So ये सारे जो बर्तन हैं, they are all oven proof. ये मिट्टी वाले ये सब oven proof हैं. Look how cute this looks. So nice. And yeah, a few more handis. So again, wooden. Sorry, matti ka handi. This is another karhai thing. This is something wooden jug I use for clicking something very traditional. Another wooden bowl जो यहाँ पीछे लाई कर रहा है क्योंकि जगह नहीं है. Yeah, and these are some few bowls. Let's get into these now. So yeah, this is again I have these. इसमें सूप सर्व कर सकते हो आप, चटनी सर्व कर सकते हो. दिस इज अ वेरी छोटू बोल बट यू कैन सर्व. देन या, सो दैट वुडन स्ट्रॉ दैट यू सॉ, इट केम विद दिस platter and bowl, and this was gifted by my ex assistant. ये जब मैं ट्रैवल कर रही थी, I got it from South. बहुत अच्छा है. इसके साथ और भी बड़े bowls थे जो कि ट्रैवलिंग में टूट गए. Grey, I like grey. Grey looks so good with your anything. Then yeah, I have these bowls जो आपने already देखे हैं. Then I have some wooden bowls over there. I'll show you one. My love for wooden is endless. It's literally endless. So yeah, this is from another bag. So I have a set of 6 of these chutney bowls. It came in set of 6.
Then this thing, blue and grey, they are unused. अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, but they are very pretty. So ये मैं लॉकडाउन के पहले ही लेके आई थी, but I haven't used it. I am planning to use it in some new projects. These are again some gifts that I got. So this is a black chutney thing. Here, all these I use for serving my chutneys. Then some big bowls, black bowls जो हम ingredients के लिए use करते हैं for recipes. I like the soup bowl. So it has a handle. एकदम Chinese look देता है ये. इसके साथ ही एक big noodle bowl है. And what else do you have? So I have these 3 jugs. ये melamine jugs हैं, but they are very good. They feel like ceramic, but they are very good. So rough handling के लिए it's very good. And then few little more bowls in there. Yeah, and this rack is complete. So this is a very basic rack. इसमें ज़्यादा कुछ exciting नहीं है. All you will see is some mason jar here, some milk canister, some bulb वाले, ये बहुत ट्रेंड हुए थे बीच में, so ये है इसमें. Then I have mini mason jar. There is a jug or vase, you can say. Again, I use this as a background thing for my photography. What else? Nothing much in this thing. So yeah, this is a mini bowl, glass bowl. आप कुछ भी मैक्सिकन बरीतो बोल, सिंगल सर्विंग बना रहे हो या लजानिया बना रहे हो, तो यू कैन यूज़ ऐसे बोल्स. तो आई हैव 12 ऑफ दीज. जब आप बहुत सारी पार्टी थ्रो कर रहे हो तो इसमें आप अरेंज करके रख सकते हो, एंड देन यू कैन डायरेक्टली बेक एंड सर्व इंडिविजुअली सबको. या एंड ये तो आपने सबने देखा है इन द स्नैक वाला वीडियो, दैट पार्टी स्नैक वीडियो. इसमें शॉर्ट ग्लासेस एंड इट इज़ लाइक, as I say, I like rustic and funky. So this is like some old चाय का thing जो पहले चाय वाले चाय देते थे, अभी भी बहुत जगह पे देते हैं. And then I have this skull वाला mason jar. I like it. So इसमें ये skull बना हुआ है. If you can see the skull. So my mother don't let me use this because it has a skull on it. So it's lying behind. Then I have this cute little pink Starbucks mug. It is also very cute. All you Starbucks lover there. Then yeah, a mini macaroon stand which is packed. This is very cute. Again, this one I got a gift. Then I have a leaf platter जो कि इस रैक में नहीं होता है, नीचे वाले रैक में होता है, but because I emptied it, so I kept it in here. So this is a very beautiful platter. Which video did you see this leaf platter? Can anybody tell me? Do comment down below and let me know. Then yeah, few more glass platters. I don't use glass much. And then I have these bowls. I love these bowls. So just look at this. So एक बाउल है जिसके अंदर एक और बाउल है, and looks so cute. I served my Nutella mousse in these, if you guys remember. Okay, so yeah, that's it for the 4th rack as well. And the last rack जो कि हमने डिस्प्ले किया है टेबल पे, I'll show you. So yeah, जो लास्ट रैक है मैंने ऑलरेडी बोला कि मैंने वो बाहर ऑलरेडी टेबल पे डिस्प्ले कर दिया. So these are all the whites that I have and these are all the blacks that I have. I think I should close the cupboard first and then I'll show it. Yeah. Okay, so that's some more and these are some random platters. So again, ये भी hand painted platter है जो कि golden color का था and I painted it in pastel. This wooden texture का platter.
My mother got this from South when she went for some Tirth Yatra. And I recently bought this before lockdown. I like marble and wooden. So I like very basic things like black, white, something very rustic, something that's very traditional, old age types, and yeah, and sometimes I also like funky. So I'm like mix of everything. Okay, so yeah, then we have few of blacks. I like black. So these bowls, this thing. Should I keep it aside? Just a second. Better. Then I have this tray. Another stone tray. ये actually आपके हर डिश को बहुत beautiful बना देता है. They come in many different shapes. And I also have another one, stone wala hi, but it is in melamine. So it is also very pretty. But this is a bigger one and this is a smaller one. So yeah, then I have these platter. So many platters. Generally, I'm like, I work in phases. Like, मेरा mood होता है. So if I follow something, I keep on doing that thing for a month or two, and then I am in another mood, and then I keep on doing things in the same pattern. And ये सबके साथ होता है. This is upon our moon sign and sunshine and movement of the planets. So yeah, I work in phases. I like work in moods. So again, here we have some more blacks. So this is the pasta platter. Same platter. I have in black and white. So I have, whenever I have a mood of white, I use this. When I have a mood of black, I use this. So it's all about your mood. A mini kadhai. Melamine pan. So I like something out of the box. So this is a bowl I like. So it is plain from here, and then it has these broken pattern. So yeah, it makes your dish look like. Agar simple si bhi dish hai, if you serve in this bowl, and this look very pretty. Again, this is irregular. I like irregular crockery. So if you will look at this bowl, it is not a common round bowl. So ये यहाँ से high है, and then when you come over here, bottom. If you can see this, I don't know that if it is visible or not. Then I have this iron kadhai. With this iron kadhai, I am coming up with a new recipe, that is pizzuki or cookie cake, जो हम इस iron kadhai में बनाएंगे. So yeah, I got this, and जब हम ये plan कर रहे थे this crockery shoot 2 days back, so we got this thing. We saw this. I was not knowing I'm having this. Can you imagine? So मुझे याद ही नहीं था कि I'm having this, and then I like quickly thought of my mind कि we will do a pizzuki or cookie cake video. Yes. So yeah, stay tuned. Then some textured plates, platters everywhere. So yeah, this is the black. Now moving on to the whites. So, though I love black too much, but I have white too much. I don't know why, but I will now invest more in blacks because I guess I like black more, and black may if you present anything, it looks good. It looks beautiful. Maybe after this lockdown. Alright, so yeah. Again a mini kadhai in white. Another saucepan, but इसमें आप cook नहीं कर सकते. This is only for serving. And a wok, white wok, which comes with this lid. So it is all about collecting. ये सब चीजें मैंने एक साथ नहीं ली है. जैसे कि मैंने बोला, ये सब मेरे 10 years का collection है. So I keep on collecting the things. This patterned plate. Then ये पूरा एक set है और 5 piece. So this is a
ceramic set. So this bowl, this plate, this thing, and this spiral platter. And this के साथ एक और आया था. Yeah, this one. So these all 5. एक और था. Yeah, there was a S platter. एकदम पतलू सा था. It's very thin. S platter and it broke. So that is not here in the family. Yeah, it was a set of 6. Now it's a set of 5. A happy family. Then I got this platter. जिसका I have again mini platter. So if you can see, I have painted this as well. So because दोनों same color के थे, and I was having mood swing. I didn't want it to use in a dark color. I wanted some new crockery. So instead of buying, I painted it. So you can always keep on changing your crockeries according to your moods. Just keep, take out some acrylic color and to paint your crockery. और आप ऊपर से एक food grade clear varnish पे spray कर दो. You're good to go. This is what I do. ये आपने देख लिया. This is again sabzi के लिए platters. So because I do Punjabi or Indian workshops, Indian cuisine workshop, again for your starters, which comes with a chutney bowl. For your rice, you can, जब guests आते हैं, you can put in your rice over in here on the dining table and again take it, another platter. So these are all that you have to see. And the last over here is these, some of these. So again, this is one of the oldest sabzi bowl that I have. Then I have this white platter, another white platter, some marble and wooden platter. I love this. I actually love this. It was so cute. So cute and so beautiful. इस पे आप कुछ भी present करो. You can serve your starter, you can serve your desserts, you can serve so many things on it. And because ये marble and wooden है, so everything goes good on this. It's so beautiful. Okay, so yeah, you have seen my whole collection of crockeries, and not whole, बहुत सारी चीजें जो मैंने निकाल दी थी, like बहुत सारे ऐसे कांच के beakers थे और sauce pans थे, spatulas, and yeah, there were lot many things that I found are not necessary to show because I use them on like daily basis. You guys have seen it, so I discarded them. Yes, with that, I found out I have a lot of knives in my collection. Knives. So soon I will do a tour of my knife collection. I'll do a vlog for that. Yeah, I hope you guys love this video. Don't ask me from where did I get all these because मेरे को नहीं याद है literally कि मैंने कौन सा कहाँ से buy किया है. So I just go for shopping और मुझे कुछ भी अच्छा लगता है I pick it up. So I exactly really don't know कौन सा मैंने कहाँ से purchase किया है. So you guys just go on Google or you guys just go on Flipkart, Amazon, Pepperfry, Urban Platter. There are so many websites and you can buy all these in there. अगर आपके town में exhibitions रहते तो do visit those exhibitions. या फिर कोई भी मट्टी का या potter कोई भी है आपके शहर में तो आप उनके पास भी जा सकते हैं. They will make it for you. Work. You can get some wooden things customized by your carpenters. जो भी nearby carpenter है उसको अगर एक image दिखाओ, they can make it done for you guys. So you guys can do that, and that is actually cheaper. If you buy, they are actually expensive. So yeah. I hope you guys like this video. Thank you for watching.